So we know primarily there are three kind of coordinates. One is the Cartesian coordinates. In Cartesian coordinates we know x, y, z. फिर आपने देखा है polar coordinates. We know polar coordinates are what? R and theta. So theta is the angle which this vector r makes with the positive x-axis, and we know what is the, so if I talk in 2D, so x is r cos theta, y is r sin theta. This we all know, right? Ab in polar coordinates ko we can take into 3D via two means, right? So there are two. One is cylindrical coordinates, and another is spherical coordinates. So today we will try to start the learn these two types of coordinate system. अच्छा, ये जो मैंने ये सारा आपको नोट्स बना के दिए हैं, दिस इज ऑल देयर इन योर बुक, कोले बुक. मैंने टॉप पे लिखा भी है, इट्स चैप्टर 1 सेक्शन 1.7, right? So if I have tried to cover all the aspects, but otherwise if you want to read in detail you can go there, you can read it, right? So let us try to understand these two systems, cylindrical system and the spherical system. See, हमारे पास 3D में, so we know, say this is my z axis, this is my y axis, this is my x axis. हम क्या करते हैं, बेसिकली अबाउट द ओरिजिन वी पुट अ सिलेंडर. सो दिस इज वन सिलेंडर. हम ये पूरी स्पेस को सिलेंडर से भर दो. I mean, imagine cylinders, all, whatever the surface is, let us fill the cylinder. Fill that surface with cylinder, all, everywhere. So what will happen, अगर आप इस plane में कोई भी एक point लोगे, say I take a point P, so this is for sure that this point will lie on any one of the cylinder, because we have filled whole of the space with the cylinders. So this is for sure that the point P will lie on any one of the cylinder, right? So let me come here. So say P lies on this cylinder, right? So this is one cylinder, P is lying on the surface of this cylinder, right? So in polar coordinates, let us try to see in polar coordinates. So what we have, from P, we drop a perpendicular distance on the xy plane, and suppose the perpendicular distance is z. So we know xy plane की perpendicular is z axis. Let us say this distance is z. तो obviously एक चीज तो clear है कि जो P की height है वो z हो जाएगी. So z coordinate will remain z. And दूसरा हमें पता है polar coordinates में what we have r and theta. So you see this is r, this vector is r vector, जहाँ पे perpendicular meet कर रहा है xy plane में, and this vector is theta vector, the theta angle. Angle theta is what? It is the angle which this r makes with the positive x-axis, right? So यहाँ से now we know कि अगर मुझे इसके coordinates निकालने हैं, तो मुझे पता है x पे, x direction में इसका coordinate कितना हो जाएगा, r cos theta. Y direction में coordinate कितना हो जाएगा, r sin theta, and height z is equal to z. So these coordinates, so you see now x is r cos theta, y is r sin theta, and z is equal to z. These are known as the cylindrical coordinates. Is it fine? So this is the relationship between the what you call it as Cartesian coordinates and the cylindrical coordinates. But is it fine? So x is r cos theta, y is r sin theta, and z is equal to z. So obviously, since theta is the angle, so theta range of theta is from 0 to 2 pi, and r is something which is greater than 0 rather. We can take it that equal to 0 also, we'll get a point in that case. Otherwise, in general, it is greater than 0. But is it fine? Cylindrical coordinates clear hai sabko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now next is spherical coordinates. Yes, ma'am. अब देखो, सेम जैसे हमने सिलेंडर में किया, हम क्या करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन के अराउंड we fit the spheres. So try to see, these are balls, whole place, you know, we fill with the balls. So if we take any point, P, so this is for sure that this point P will lies on the sphere. So what we can have, so basically so this is z, this is y,
दिस इज x, राइट. सो अगर मैं बॉल की बात करूं तो मैं बॉल को दो तरह से काट सकती हूँ. एक, मैंने बॉल को काट दिया, स्फीयर को काट दिया अबाउट द एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन. तो दिस इज लाइक, you have a ball, you have a tomato, you slice it from the center. So ये हमने इसको हमने इसको एक तरह से एक्स वाई प्लेन में कटिंग कर दी, और दूसरी कटिंग हम इसकी कर सकते हैं इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट विल हैपन, तो कोई पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा ऑन द सरफेस. सो से दिस इज माय पॉइंट. So obviously if I join this distance, this is the distance of this point from the origin. The angle which this point makes with z axis, the angle which this point makes with z axis, we call that angle as phi. We call this angle as phi. Again हमने क्या किया, इस पॉइंट से xy प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, right? Let us join origin with the foot of this perpendicular. So what will happen? So this is point P. Let me call this as point A. This is origin. So OA is say R, again the radius vector, and this angle is the angle theta. Beta geometry clear? So let me show you this one. So beta, is it fine, all of you? So you see, this is what I was saying. इस फिगर में, so you see, ये पॉइंट P था, this is your point P. So this is origin. तो जो z एक्सिस के साथ P एंगल बना रहा है, this angle is phi. फिर हमने P से परपेंडिकुलर गिराया in xy plane, right, at the point A से. तो obviously OA को हमने R ले लिया, और जो एंगल OA बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, that angle is theta. बेटा, is it clear? Yes, ma'am. Again if you see PA, जो हमने परपेंडिकुलर गिराया है, उसकी लेंथ हमने z ले ली. So now we will try to find. So now one thing is clear कि xy plane में, अगर मैं xy plane में चली जाऊं, तो x is nothing but r cos theta and y is nothing but r sin theta. Right. So now if you see in this triangle, triangle OAP, triangle OAP. So you see this is my P point, this is A point, right? So this is PA is perpendicular. This is O point. So OA is R, PA is Z, and OP is rho. So if you see Z axis है, this angle is phi. So I know this angle will also be phi, vertically opposite angles. So you see, this is 90 degree, this is phi, and sum of the angles in triangle is 180 degree. So this angle will be pi by 2 minus phi. So अगर मैं इसमें trigonometric formulas लगा दूं, so you see, base upon hypotenuse, so r upon rho will be cos pi by 2 minus phi. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? Rho. Cos is how much? Cos is how much? Sin. So this is sin phi. Similarly, अगर आप base upon perpendicular upon hypotenuse कर दोगे, तो z upon rho. So this will be sin of pi by 2 minus phi. So sin of pi by 2 minus phi is cos phi. So यहाँ से if you see z की वैल्यू कितनी आ गई? Z is rho cos phi. So अगर आप देखो यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है, जो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज रो. अदरवाइज इन जनरल हम r लेते हैं, इसलिए r cos थीटा r sin थीटा आता है. तो यहाँ पे we'll change everything into rho because the position vector of the point with respect to origin is rho. r जो है वो प्रोजेक्शन है एक तरह से. So if you see z की तो हमें वैल्यू मिल गई. So z is what? Rho cos phi. So now x is what? और r की हमें वैल्यू मिली है rho sin phi. So what is x? X is rho sin phi cos theta, and y is how much? Rho sin phi sin theta. So these coordinates z, x, and y. These coordinates are known as spherical coordinates. So x is rho sin phi cos theta,
y is rho sin phi sin theta and z is equal to rho cos phi. मैं इसको याद कैसे रखती हूँ? I remember x is equal to r cos theta. This is the reason I have written here also. X is equal to r cos theta. ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. Y is equal to r sin theta. Z you remember as z is equal to rho cos phi. Z is equal to rho cos phi. तो अगर आप देखो, बस इतना याद रखना है कि cos phi आ गया है, तो यहाँ पे sin phi आएगा, दोनों वैल्यू सेम होती है, and rho will come everywhere. So x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, z is equal, उसमें क्या होता है, उसमें z is equal to z होता है, इस so उसमें क्या होता है, x is r cos theta, y is r sin theta, z is equal to z. और स्फेरिकल में क्या हो जाता है, x is r cos theta, y is r sin theta and z is equal to rho cos phi. तो अब cos तो आ गया, तो क्या बच गया, sin phi नहीं आया अभी तक, तो x में क्या आ जाएगा, rho sin phi, y में क्या आ जाएगा, rho sin phi. Is it fine? Yes, ma'am. Right. And दूसरा, if you see here again, theta and phi are the angles with the circles. एक एंगल ऐसे था, एक एंगल ऐसे था. So the range of theta is also 0 to pi by 2 and range of phi is also 0 to pi by 2 and rho should be greater than or equal to 0. Right. So this was about the cylindrical spherical coordinates. Okay. So ये जब हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स शुरू करेंगे, ऑर्थोगोनल सिस्टम, तब हमें चाहिए होगा. So just I wanted to give you an introduction. So basically देखो, हमें पता है जब भी मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेती हूँ, we have so x axis, this is y axis, this is z axis, और हमें पता है x axis के along यूनिट वेक्टर हम लेते हैं i cap, y axis के along यूनिट वेक्टर लेते हैं j cap, z axis के along यूनिट वेक्टर हम लेते हैं k cap. And if since the x's are fixed, x's are not changing, so this I vector, j vector and k vector, they are also fixed. They doesn't change अगर आप point की position change कर दो. Similarly, in case of cylindrical coordinates, the unit vectors are denoted by er, e theta and ez. R, theta, z, cylindrical coordinates. So these are the standard unit vectors. And obviously इनकी direction क्या है? Their direction is the same, right? In the direction where this subscript increases. तो जैसे I की direction कौन सी direction है? The direction of the x-axis. जिस direction में x-axis increase कर रही है, that is the direction of I cap. J cap की direction क्या है? This direction में this is increasing. So similarly, so this is say maybe this is, so this is say EZ. So EZ is the direction of EZ is the direction where the Z is increasing. Then this is ER. So ER is the vector in the direction where R is increasing, and E theta is the unit vector in the direction where theta is increasing. So अगर आप देखो, अब जैसे जैसे मैं सिस्टम में पॉइंट लूंगी, जैसे जैसे हम सिस्टम में पॉइंट लेंगे, so say this is my x coord, so this is my one point, this is my another point, this is my another point, this is my another point. So आपको पता है थीटा भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है. So what will happen? So in this case, the standard basis coordinates also changes, because e theta, because now this is something which is related to rotation now. Theta means angle, so angle means the direction, right? So at every point these coordinates will be different, right? So now the question is, how can I find the standard basis? Answer is yes, it is very easy to find these standard basis. We'll try to find these standard basis for cylindrical coordinates in terms of x, y, z only, right? Suppose हमने क्या किया, कोई एक point ले लिया P, and P coordinates are x, y, z. So let any x, y, z. So this is P. So this belongs to R. So हमें पता है in cylindrical coordinates, Z is same as Z. So there is no change in the Z. Z remains fixed. So obviously अगर Z same है, so what will happen? What will happen? EZ will also remain same. Can I take EZ as k cap? Beta, can I take EZ as k cap? Yes, ma'am. Right, because Z is same, so there is no change, right? So EZ will remain as k cap. Okay. So is it fine, beta? यहाँ तक किसी को doubt? EZ is equal to k cap.
But is it fine? Yes, ma'am. Okay. So now let us come to ER. So हमें पता है R वेक्टर हमने कहाँ पे लिया था, हमने R वेक्टर कहाँ पे लिया था, हमने P से परपेंडिकुलर गिराया था XY प्लेन में. तो वहां से एक वेक्टर जो बेसिकली बाहर R ओरिजिन से पास कर रहा था, राइट, एंड XY प्लेन. सो अगर आप देखो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, R वेक्टर अगर मैं पैरेललोग्राम लगा दूं, सो R इज नथिंग बट X प्लस वाई. सो R इज नथिंग बट X प्लस वाई, और दूसरा R जो है वो कहाँ पे है, XY प्लेन में है, तो R का K कंपोनेंट 0 हो जाएगा. सो अगर मैं पॉइंट की टर्म्स में बात करूं, सो कैन आई टेक ER एज, बिकॉज मुझे कोई भी एक यूनिट वेक्टर चाहिए उसके डायरेक्शन में, सो व्हाई नॉट इन्वॉल्व द पॉइंट ओनली. सो XI कैप प्लस YJ कैप. दिस इज बिकॉज XY क्या थे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, एंड दिस इज द रीजन हमने XI कैप प्लस YJ कैप कर लिया. इसमें K कोऑर्डिनेट है नहीं है, एंड इफ यू सी R वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज सम ऑफ X प्लस Y, राइट. और सिंस हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमने क्या किया, सो दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. इज इट फाइन बच्चे? सो इफ यू सी, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो x की वैल्यू कितनी थी, r cos थीटा. x की वैल्यू कितनी होती है, r cos थीटा. अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज r. सो r will cancel, so this is what, cos theta I cap plus, so y upon, again y is r sin theta, under root of x square plus y square is r, so r will cancel, so sin theta j cap. Beta, is it fine? So this vector cos theta I cap plus sin theta j cap is the unit direction vector along the R. Is it clear? Girls, clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, so ma'am. EZ मिल गया, ER मिल गया. अब हमें पता है E theta क्या है. E theta is what? E theta is their vector जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है. So E theta is perpendicular to both EZ and ER. और मुझे ये पता है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते, अगर I mean, एक वेक्टर मुझे निकालना है जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, I will just take the cross product, because cross product will give me a vector which is perpendicular to both the vectors. So you see, so what is E theta? So E theta will be cross product of EZ and ER. EZ आपको पता है कितना है, वेक्टर K, and this is X y xi cap plus yj cap over under root of x square plus y square. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, x upon under root of x square plus y square, k cross I. So we know this is I j k. So k cross I. So k cross I will be how much? J. So you see J. So this is xj. And similarly, what will be the next bracket? K cross j. K cross j will be minus I. So this is minus y I cap. So अगर आप again इसको simplify कर लो, so y over under root of x square plus y square. So we know y कितना होता है, y is r sin theta. So r will cancel. So minus sin theta I cap, right, plus cos theta j cap. So you see, these are the standard vectors, unit vectors along r direction, theta direction and z direction. But is it fine? Is it fine बच्चे, all of you? Ma'am, हाँ जी मैम थीटा r और z के परपेंडिकुलर कैसे है? बेटा हमारी ये कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, so this is कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमें पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं. हम कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वही लेते हैं ना जिसमें तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. बेसिक फंडा विल रिमेन द सेम. जो हमारी कार्टेशियन सिस्टम में x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर परपेंडिकुलर सिस्टम, एंड इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स y and r and theta are taken in such a way that the basic principle remains the same. Coordinate system means those system of axes which are perpendicular to each other. Is it fine बच्चे? Yes. हमारी तीनों एक्सेस, चाहे आप 2D में बात कर रहे हो r और थीटा में, चाहे आप 3D में बात कर रहे हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस those axes which are what you call it as perpendicular to each other. Always. Okay, so before I stop, so this is chapter 3. So chapter 3 में आपका शुरू होता है from 3.3. I just want to, this we have already discussed
just I want to show you from here. So we have already discussed, so these are some 2-3 definitions which I want to discuss. So the first definition is definition of vector field. So you see, we know, I have already discussed, vector field means जो हमें vector देता है, right? So any function f from Rn to Rn, right? तो अगर आप कोई भी point उठाओ Rn में से, right? So answer will be what? Answer will be a vector, right? So vector field is what? It is a field, right, which basically assigns to each point x in x a vector in Rn. So अगर मैं point AB लूं, so I take a point AB in 2D, right? So vector field मतलब क्या हुआ कि उसके corresponding vector. So A I cap plus B J cap. अगर मैं point लूं A1, A2, A3, तो vector field means A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Is it fine बच्चे? So means वो field, right, जो basically vectors से भरी हुई है, right? So this vector field is full of all the vectors. Is it clear बच्चे? So that is the vector field. ऐसी स्केलर फील्ड क्या हो जाएगी इफ यू रिमेंबर, जिसमें मुझे स्केलर्स मिलते हैं, जैसे हमने एग्जांपल भी किया था मैग्नीट्यूड. अगर आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, सो वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ यू हैव a I cap plus b j cap, so magnitude of this vector is what? Under root of a square plus b square. So this is a scalar. Is it clear बच्चे? So this will be a scalar field. Is it clear बच्चे? बेटा क्लियर है? Girls, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, Yes. gradient field. So again, that field, right, which is filled of gradients, right? So basically, a gradient field is denoted by capital F, right? So अगर आप कोई भी x, if you take any function, so obviously x is what now? This x here is what? हमें आप पता है कि gradient हम किसका लेते हैं? Gradient हम लेते हैं scalar point function का. तो basically आपके पास क्या है? अगर आपके पास कोई scalar point function है f, right, which is a mapping from x to r. So you see, x is what? X is this input, right? So हमें पता है scalar point function का आंसर भी scalar आएगा. So that is the reason this is still r. So real number. So if you have a scalar point function f, और अगर आप उसका gradient ले लो, so gradient of so you take the del operator, so right, gradient of f is what? Capital F. So in सब की collection, right, so that will be what we know. Gradient is always a vector quantity, so that is the reason it is known as gradient field, right? It is known as the gradient field. And this function f, small f, जिसका आप gradient ले रहे हो, the scalar function, right, that is known as the potential function for this gradient field f. Beta, is it clear? Right? So basically, अगर आप gradient field में से कोई भी vector उठाओगे, so that f, so that vector capital F will be the gradient of some scalar function small f. So gradient field means वो सारे functions जो किसी function का वो है, what you call it as gradient है. So उन सबके collections अगर मैं कर दूं, सारे gradient fields को जो gradient fields को मिलके, जो सारे gradients को मिलके जो collection बनती है, that is gradient field. So this is like a set. So set, when I'm saying gradient field means it is a collection of all the gradients. So obviously अगर मैं उस field में से, gradient is a vector, that is the reason we say it's a vector field. And अगर मैं उस vector field में से कोई भी एक vector उठाऊंगी, so that vector will be gradient of some function. और वो जो function है जिसका वो gradient है, that is known as potential function. Beta, is it clear? So these definitions are there in your syllabus. Although we have discussed this, that's why I wanted to give explicit definition. Beta, is it clear? Beta, clear है सबको? Yes, ma'am. अब again if you see, we have already seen that the gradient, अगर हम किसी भी function का gradient लेते हैं, तो that function is, so if you pick up the gradient of any function f, we know that function, that gradient function is perpendicular to f. So gradient function is perpendicular to f. So इसका मतलब अगर f मेरा gradient vector है, right, then obviously then that capital F of x will be perpendicular to the potential function of f.
बिकॉज पोटेंशियल फंक्शन क्या था? पोटेंशियल फंक्शन इज व्हाट? पोटेंशियल फंक्शन वो फंक्शन था जिसका हमने ग्रेडियंट लिया था, और ग्रेडियंट हमें हमेशा पता है कि फंक्शन, जिस फंक्शन का आप ग्रेडियंट लेते हो उस फंक्शन के परपेंडिकुलर होता है. तो इन अनदर वर्ड्स we just use the word that the gradient, in this case the gradient field is always perpendicular to the potential function, right? That's it. So what I'll do, I'll stop here. So we'll discuss the flow lines tomorrow. Is it fine, bache, all of you? So you can just go through this. If you have any doubt, we can discuss tomorrow. Okay beta.